Thank you. A very good afternoon to all. So, first of all, you all are LDC or MTS, no? Multitask. No? Okay. So, all you are posted here or okay, different places. Very good. Where is the headquarters? Guwahati. Okay. Vashisht mein. Okay. So, see, today what I will be teaching or I will be covering is called GeM. Now, it is not very new, but you must have used Flipkart, Amazon. It is a regular phenomenon. Every day we are purchasing. But for government, they have come up with a portal called GeM or Government E-Marketplace. Okay. Now, there are several aspects because during 2017, under Digital India initiative, this was launched. So when it was launched, before that, it is not like that before GeM came we used to purchase, but there were certain rules like the departments were there that was called DGSND. Okay, so the DGSND got digitalized and it got a new name as GeM. So it is called Government E-Marketplace. I'll try to give a brief because in 1 hour it is not possible to make you learn what is GeM. You have to learn on your own. Okay, because own in the sense you must be having GeM accounts. आप लोगों का है कि नहीं GeM accounts? So okay, so to use GeM you have to have a government mail ID, and with that mail ID you can create. So I'm from ICSR Research Complex for NH region, Umiam, and I'm the nodal officer since 2017 when it was launched. Still then, since then I have registered. We have got even open DigiLocker for GeM and all. We have got GeMpool account. So all these processes were done by me only. So I have not taken any additional training for this because basically I am an MC. My background is MCA, so I have been assigned this task. Okay, so I'll try to give you as brief as possible, and if you have any questions, okay, you can raise at any time. Okay. Okay. Now, what is GeM? GeM don't get so complex. It is not at all complex. You just have to see that it is an online portal for public procurement. Okay, because as you are in a Government of India institute, you have to purchase from somewhere. You cannot buy it from Flipkart. These are Flipkart or Amazon. Earlier they used to buy, but government after introduction of GeM, it made it mandatory that you have to purchase, be it anything. Okay, be it a needle or be it anything. Okay, you have to buy it from GeM. If the item is not available in GeM, then also you have got provisions. You can go for bidding. Okay, there are several kinds of biddings are there, in which you need not call for any papers and all. All these are paperless. Okay, and fast. And through GeM, the peoples are we can keep track of the item. Okay, we can see whether the item is delivered or not, and if it is not being delivered, you can raise queries also. Okay, or raise tickets. I'll show you how it has to be done. Now, what is a GeM? It is a one-stop online procurement portal for all central and state agencies. You have to this is very important. It's not that all central government employees has to buy or officers has to buy their goods and services. There are two things. One is goods and one is services. Goods means that you can like pen, pencil. These are goods. Okay, it comes like if I bought more than 20 vehicles in GeMs. Okay, more than 10 buses I have purchased through GeM. So these are goods. But what are services? Services are like your manpower service. Okay, daily wages services, security services, printing services. These will come under services. Laundry services. Okay, and then canteen or catering services. These will come under services. So what is GeM? You have to keep in your mind. These are cashless, contactless, and paperless. Okay, why cashless? Because you are not dealing directly in cash. Okay, you are placing the order in GeM.
it is being delivered and the payment will be done online. So it is transparent, okay, and you can held accountable. Nobody, and to have a GeM account is very important, because see, everybody of us, we are human. So sometimes we may go in the wrong direction. So you have to be very cautious while procuring GeM. Vendors will come and meet you, and vendors will try to manipulate you. Okay, because what government has done is that up to 50,000 rupees, you need not compare. Okay, you need not compare. You can buy any things that you want. You need not give justification also. Now 50,000 is not a matter of joke. Means it's not a little amount. Suppose you want to buy a chair. You want to buy 2 chairs. So you can get 2 chairs within the range of 50,000. Okay. So what should be your ethics? Your work ethics will say that I will go for the best quality. Okay, I will go for Godrej. If it is a furniture, it is a trustable brand. Okay, so 2 chairs of Godrej will cost say around 20,000 or 25,000 or 30,000. Okay, but that is well below 50,000. Now, if you say that okay, I will not go for Godrej, I will go for any local brand. Okay, and I will say that it is 30,000 and I will buying the product of 10,000. Okay, so you have to keep in your mind, you have to, every time you have to be alert that your work ethics has to be there, because being a GeM nodal officer, I have been handling for last 7-8 years now. Okay, so vendors will come to you, will try to manipulate you, and it is very important. See, vendors are outsiders. They will come and they will try to do only business with you. But you are here, you have to see the interest of your institute. Okay, so moral ethics you have to, and being a nodal officer, I'll tell you that I have been handling this job for last 7-8 years. That it is an additional job that has been given to me. My job is different. My job is for project evaluations and all. Okay, so, but apart from that, as because I am from MCA background, so they have assigned me that job during 2017. So since then, and I have 27 institute under my hand. Okay, so under this 27 institute, I used to handle these procurement things. So one more thing is that important, where from this GeM has come. Earlier GeM, before GeM it was DGSND. No, so you must have heard, just before this class I think you had your GFR class, no? After this one, okay. So GFR means General Finance Rule. Okay, so every procurement in government purchases, you have to follow GFR 2017. Okay, GFR 2017, and GFR 149, it comes under GFR 17. In 2017, GFR came 23 also, it has been revised. But in 2017, under Digital India platform, Rule 149 is strictly meant for GeM procurement, government e-marketplace procurement. Okay, so 149 means GeM, that much you know. Okay, so we have got multiple tools there. We can go for DP. DP means direct purchase. Direct purchase means up to 50,000 you can go for direct purchase. You need not see what it is coming, but you have to be specific that it has to meet the indentor's requirement. Okay, what is the indentor's requirement? When any indentor will give any indent for any procurement, he will give the specification. And one more thing, because you are belonging to administration, you have to maintain certain ethics. Ethics in the sense, all specification has to be generic in nature. Nobody can write that I want Godrej table, I want laptop of Lenovo. Nobody can write the company brand name. Okay, in any indent, if any indent comes with a specific brand, you have to immediately return it and ask the indentor to give a generic specification. Okay, so see, suppose if I want to buy a computer, I can give a range like 4 GB to 8 GB RAM. Okay, I cannot strictly say that I want 8 GB RAM only, I want 12th generation computer only. So these specific things you have to, and these are all for your safety, because when audit will come, audit will see the file and audit will ask you, not the indentor, because they are the end user, they will be using it.
but auditor will come and see the file whether the specification that has come from the indentor, whether it is generic or not. It has to be generic in nature. Okay, and we can go for direct purchase L1. L1 means, see, up to 50,000 is direct purchase. Now from 50,000 to 10 lakhs, you can go for comparison. Means you can compare 3 brands. Minimum 3 brand has to be there. Like if I want to go for a computer, I can have HP, Lenovo, Dell. Say for example, comparison has to be done from in 3 brands. That is important. Minimum 3 brand is required for comparison. And after doing the comparison, any product up to a level of 10 lakhs you can buy. Individual product, not group combined product. Okay, any individual product up to rupees of 10 lakh, you can go with L1 purchase. L1 means lowest one. Okay, and then you can go for bidding. I'll tell you what is reverse auction also. Reverse auction is something like it is not meant for vehicles. Okay, vehicle is different. So any procurement which is above 30 lakhs, any procurement which is above 30 lakhs, above 10 lakhs you have to go for bidding only. Okay, you cannot go for direct purchase. So if the valuation is above 30 lakhs, what happen is that suppose when you float the bid, bids will come, participants will participate in the bid, and after opening the financial bid, as because it is above 30 lakhs, you have to select, while creating the bid, you have to give like 50% of the selected vendors. Say suppose 10 participants has come, are qualified in technical bid. Out of that, top 5, L1, L2, L3, L4 and L5 will be chosen, and the L1 prize will be open to all this L5, L1, L2, L3, L4, L5. So suppose I am floating a bid and the L1 has come 32 lakhs. That 32 lakhs will be open to L1 vendor, L2 vendor, L3 vendor and L5 vendor, and again the competition will be there. Like so L1 will say that I am going to offer it in 32 lakhs. Then L5 may say that no, I will do it in 30 lakhs. That means what? Reverse auction is there. Okay, it means L1 price of the L1 vendor will get open, and the L1, L2, L3 and L4 and L5 participants can re-participate quoting their lowest rate, and in that one what will happen, whoever will be the L1, that firm will be given the order. Okay, that is called reverse auction. And forward auction is also there. Forward auction I will not go in detail because it is not that important and it is not in use also. Then so what is GeM for? GeM makes it efficiency, transparency and inclusiveness in public procurement. Okay, next, say anything you want to do, the first thing that has to come in your mind is that why I will do it. Okay, if you are not convinced among yourself, if you are not convinced, then you cannot make other convinced also. Okay, that is important. If I want to do, if somebody has asked you to do something, what comes to your mind? That why I will do it. So until and unless you are convinced that okay, for this reason I will be doing it. So for GeM also, every time I say that if you want to do GeM, you need to know that why you want to do GeM. Okay, so if you can solve this problem, you can learn it. And I'll tell you that GeM, I don't know that how much I have learned, but at least I can say that at least 1 to 2% of GeM I know. Okay, so why I'm telling you this, every day GeM is changing its rule positions. Okay, earlier what we used to do in 2017, comparison in the comparison sheet only the vendor name used to come. Now when GeM noticed it, they have blocked it. So in this way, every day in GeM some changes or the other is coming. So you have to be, so to keep yourself updated, you have to learn, you have to see the video tutorials, everything is available in open source and you can go and check. Okay, now I've already told that GeM is for enhancing efficiency, transparency, inclusiveness in public procurement. Inclusiveness means participation of all. So suppose if you are staying in Guwahati and your headquarters is in Guwahati, what you used to do for procurement? You used to go for LPC, local purchase. You used to go to the local market, and in the local market it is not that you are searching the whole Paltan Bazaar, you are not searching that.
you are going in selective vendors, getting their quotation, and then of these 3 or 4 quotations you are trying to give up to a particular one. But in GeM, the market is open. It is open to the all India level. Okay, and the prices that are available in GeM, when you search in anything, I'll show you in my slides also, these prices are so competitive that in GeM AI is being used. Okay, so suppose I'm buying a good in Flipkart. Suppose I'm buying this diary, say for example, of 300 rupees. Okay, in Flipkart, GeM used to track this price. So GeM used to keep track of the price of the last vendor or last person who has bought it, and this price in GeM, it is the government has made it mandatory that minimum 10% discount that has to be given for the government procurement. Okay, so suppose a pen costs 10 rupees, that pen has to be 9 rupees in GeM. He cannot make it 10. So minimum 10% discount has to be given by the supplier or the seller. Okay, so now it provides various tools like direct procurement, e-bidding. Bidding has got 3, like bunch bidding is there, BOQ bidding is there, custom bidding is there. Well, now what is bunch bidding? Okay, bunch means what? Suppose, say for example, I have got 27 institute. 27 institute means 6 regional centers, 1 headquarter. So 7 and 20 KVKs are there under me to see the procurement. So what I have to do is, suppose, say for example, our Arunachal Pradesh center wants to go for service bidding, manpower. Now it is not possible, say Arunachal has got 5 KVKs and 1 regional center. It is not possible that I will float 6 bids for service. What I will do, I will bunch them together. What I will do, I will bunch them together and I will float a single bid. Okay, so that is bunch bidding. So I will not go in depth, so that because time is also very restrictive, but if you have any doubt you can ask me. If any concept you are not getting in, you just ask me, I will show you how. Now see, sometimes these pictures will solve everything. Okay, now see how it works. Earlier it was DG S&D, as I said, was there. So what DG S&D used to do, annually they used to bring out a rate chart. Earlier क्या होता था कि government used to give a manual rate chart, and according to that rate manual you have to go and you can purchase. Suppose the government has fixed the rate of ball pen rupees 9. So with 9 rupees, below 9 rupees, you can buy it from anywhere. Okay, so DG S&D. But after GeM has come, see, branches of government organization, PSU, autonomous bodies, local bodies, constitution bodies or statutory bodies, whoever is there, okay, they will go to GeM. Okay, they can buy in GeM through direct purchase, L1, bidding and reverse auction. Okay, and then what are the things they can buy? They can buy, and who can participate in the GeM? See, services from the seller, service provider, and there are more than 350 services available in GeM. Okay, and seller, there are more than 1 crore items are there available in GeM. Okay, so in these few years GeM has come up a lot. Okay, so that is one. And now why GeM is unique? Because I told you, that you should be convinced among yourself that why I will do GeM. For that you need to know that if somebody asks you that many people will say that no, GeM items are not good, GeM prices are not reasonable, I can get the same item in a very reasonable price from the local market, but it may be in some certain specific items it may be there, but we have to see the large interest. Okay, see, in GeM the government is earning like anything. Okay, we are keeping account of that money, the government money, because public money you have to be very careful how it is being used. Okay, so why GeM is unique? It compares the last procurement price, as I told of this diary. So suppose you are buying this diary from Flipkart of rupees 300, then GeM used to keep track of that location, that price. Okay, and when you will search in GeM, you will see this particular diary will be less than 300. This is just a simple example. Now next is what? Comparison with other e-commerce prices. That's what I already told.
price holding period for 10 days. Now once you add an item in GeM card, that price will be fixed for next 10 working days, not working days, 10 days. Okay, that price cannot be altered. Okay, so it is also there. I'll tell you why this holding period is there, because there is a process in government procurement. You cannot buy anything without approval, no. So that approval process needs to be completed within 10 days. Okay, and then you can place the order. Now what is that? Minimum 10% discount for the government, that is has to be there. And then quantity based discount. Suppose I am buying 2 pens, it may be 18 rupees, but if I buy 2000 pens, it cannot go at the rate of rupees 9, it has to be below. So based on your quantity, your discount will be there. Like if you want to 5%, 10%, 15%, a minimum 10%, say 10%, then it will go. If you are buying more than 5,000 pens, it will go to 15%. Okay, so that is already been fixed. So that window is for the seller. When seller will upload the goods, that window comes to them. Now next is what you have to be very specific. There no vendors can ask for any transport services, transport things. GeM, all delivery in GeM is free of cost. Okay, and free delivery at consignee location. And one more thing I'll tell you, when you give order in GeM, you receive the goods, that does not mean that the item is okay. You have to generate a CRAC, consignee receipt. Once you generate the consignee receipt, that gives the certification to the seller that the items you have received in good condition. Okay, and after that, what happens, I have seen in many places, what they used to do is that once the material is received, they don't open it, they don't check it, and they generate the CRAC to process the bill. After a few days, when the indenter opens it, they find that some defects are there. So if you find out any defects after generating the CRAC, you will be in trouble. Why you are in trouble? You cannot return that good, because once CRAC is generated, you cannot tell the vendor that your product is not good. Okay, so when in your case, I'll tell you, like when you get an item, before generating CRAC, you call the indenter, ask them to receive the goods. Generating CRAC is not that hard and fast. You can receive the goods today, you can generate CRAC tomorrow also. Okay, so let the consignee give in certification that the item received is in good condition. Why I am telling you? Because ours is a research institute, and we used to get so much of chemicals, so much of glasswares. Okay, and most of the glassware, when it comes, some of the glasswares get broken. Suppose I have ordered for 5 beakers. Okay, out of 5 beakers, when I received it, I found that 2 of them are broken. So when 2 of them are broken, if I forget to see it and I generate the CRAC for 5 beakers, then I cannot, in any case, I cannot tell the vendors that you just take these 2. He will not take back. So once you receive the good, the options are there. The item delivered is 5. How many you have received? You will write down 3. And what are those 2? What about those 2? You will say that broken. So automatically the GeM will reduce the price, your bill amount, for 3 beakers only, not for 5. Okay, that is also important. Recently, what happened in one Indian, there were almost 29 items. Okay, so I have processed. So what happened, like that only 100 rupees item was broken. So out of those 29 items, 1 item came, and out of that one single item was broken. So when I generate the bill, it get 100 rupees less in the amount. So in the account section, what happened? They saw that okay, I have the initial proposal was for 1 lakh rupees, say. Okay, and the final bill is coming around 99,900 rupees. So he was not clearing the bill. Then when I inquired that why you are not clearing the bill, he said that the actual sanction amount and actual bill amount is different. Okay, so then we have to give justification that the item that we have received a broken item which cannot be taken up, and when you report in the GeM, the seller will take that back. You need not send it. Sometimes the seller will tell you that no, okay sir, what you do is that you send it by post or send it by courier, I will pay you. Don't do that. Never do that. Okay, don't try to be any part, not in the part of the indenter, not in the part of the seller. Okay, try to be neutral.
Okay, next. And yeah, this is GFR 149 of GFR 2017. It got revised in 2023, but this 149 GFR has not changed. Okay, so up to 50,000, you have to remember that up to 50,000, no comparison is required. You can go to the GeM, select the location, consignee location, and then give direct order. 50,000 to 10 lakhs, the GeM seller having the lowest price among the available seller at least 3 different manufacturers on GeM. ठीक है, ये तो मैंने बताया था आपको कि 3 मिनिमम वेंडर सिलेक्ट करना है. OEM मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. 3 OEM has to be selected minimum for comparison up to rupees of 10 lakhs for a single item, not for say a bulk item. For any item, suppose you are buying say chairs, you are buying tables. For chair 10 lakh you can go. For tables you can go up to 10 lakhs. Okay, so that is for comparison. Now when you compare, GeM will select its own L1, and you have to be very careful, sure that GeM L1 has to be your L1. Suppose sometimes what happens is that you are selecting 3 items and the item you want is not coming as GeM L1, it is coming as L2. Okay, so you can select that one, you can go for that one, but in that case you cannot go for direct bidding. That item you have to go for bidding. Okay, इससे पहले आप लोगों ने किसी ने GeM यूज किया कभी? You have used ना, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कि GeM में क्या होता है कि हम 3 आइटम सिलेक्ट किया है, हमने 3 आइटम सिलेक्ट किया है, और उसमें से क्या होता है कि सपोज बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर में ये होता है. आजकल क्या होता है कि इतना असेंबल कंप्यूटर आ चुका है, उससे होता क्या है कि सपोज यू वांट टू गो फॉर डेल. मी तो पर्सनली आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड डेल, बिकॉज डेल का जो ड्यूरेबिलिटी है इज वेरी नाइस. Okay, I've been using a Dell machine for last 7 years, and I have not faced, not even a single technician has seen it. Okay, so Dell is not coming L1. So what is my intention? My intention is that I want good product for the institute. You have to always think for the betterment of your institute. Okay, you cannot see that okay XYZ is coming as L1, I will give order. Don't do that, because once the inventor receives the good, and if the item is not performing, you will be mostly harassed, and blame will come on you, thinking that you might not be knowing who is the supplier, but blame will come on you. Then that person must have taken something from the buyer, and it is something wrong is there, because anytime he gives any order, the items are not coming good. So make sure that when you give any order in GeM, it has to be very specific, and you try to have knowledge on that product. So you may not be the expert of all things, but what I used to do basically, see, my background is IT, so in computer I believe that nobody can give me more knowledge. So I know what I need. But suppose somebody wants to buy a say thermometer, say for example a small thermometer or microscope example. So microscope knowledge I may not have. So what I will do is that I will call the inventor. Okay, I used to make him sit in front of me, and then I used to see his or her specification, which has to be generic. Okay, when the inventor will give the specification, he or she is to certify that the specification I have given is generic. So I used to make him sit, and then in front of him or her I used to search. Okay, so it is more transparent. What I believe is transparent, but as per financial rule, you are not supposed to make them sit. But unofficially, I used to make them sit, because when some material will come, he cannot complain, because he cannot complain that okay you have bought something which is of no use for me. So that allegation doesn't come to me. So I used to make them sit. Okay, even for the regional centers, even for KVKs, what I used to do in UltraViewer. I think you must be knowing that how to share the desktop. For sharing desktop, no, I used to do like that only. With UltraViewer or any desk, I used to share the desktop, and then I used to make them sit and see that what I am doing. Okay, so up to above 10 lakhs, anything above 10 lakhs, you have to go for bidding. Okay, you have to go for online bidding. Biddings it may be BOQ bidding, it may be custom bidding, it may be bunch bidding. Now, one thing you can just note down, in GeM, if you want to go for bidding, you have to give the GeM non-availability certificate.
That is important. That is also very important, is that which item you will go for bidding. There is one way direct bidding is that suppose you are selecting 3 items and the item costs more than 10 lakhs, then directly you can go for bidding, no issue. But if you want to go for something, suppose this room, if somebody wants to make it a workstation, okay, say for this room you want to make it a workstation. So is it normal bidding will not do, because who will be knowing the length of this room, who will be knowing the height of this room and what arrangement you want. So in this kind of condition we go for custom bidding. We used to go for custom bidding. And why? When you go for bulk BOQ bidding, so suppose there are 100 items. Suppose there are 100 items. 100 items going for a single items will generate 100 orders. Okay. So what we used to do is that we used to club them together and we used to go for BOQ. BOQ means bill of quantity. Okay, BOQ bidding. So if there are multiple items, but even in that case also, if there are multiple items, try to see whether the items are available in GeM or not directly. Okay, if the item which are not available in GeM, you club them together and then go for BOQ bidding. Okay. So now this diagram you can just have a see. This is just a see for direct purchase, any amount up to 50,000 we can go for direct purchase. Say, I think by now it is very clear. Earlier it was 25,000, now it got increased to 50,000. Now one important thing is there, see, push button procurement. This is very important. I'll tell you something about this one, and this is how it is very interesting. So suppose bidding, if you go for bidding, what happens is that you have to float the bid, then bids will come, then you have to download the bids, you have to form a committee, then technical evaluation will be there. Once the technical evaluation is there, you have to evaluate the technical bids, and then you have to take the approval of the competent authority, then financial bid, then that approved technical bid has to be uploaded, and then after 48 hours your financial bids will open. Okay, you have to, that is also an important thing. Just uploading the technical bid will not let you open the financial bid. What will happen is that it will give a prompt, then after 48 hours you will be able to open the financial bid. Okay. Now why this 48 hours? In these 48 hours the other vendors who are rejected, they have a chance to give a representation. They will say that no, you have rejected for this reason, I am submitting this one. So that is a window given to the rejected seller. So suppose if you accept it, is okay, if you reject it also, it is okay. So once you open the financial bid, okay, once you open the financial bid, that financial bid again has to be placed before the committee, and then the financial L1 has to be selected, and then order is given. So it takes a long 1 month time, because, and one more important thing, when you go for bidding, don't go for 10 days bidding, because in GeM you can go for 7 days bidding also. But for your safety, I'll tell you, you go for 21 days bidding minimum. Okay, minimum first bidding has to be 21 days. Even for second time also, if suppose that no bid has come, you go for 21 days second time bidding. Because you have to be very careful, because these things are, because as you are in administration, you need to know, and always keep Swami's handbook in your pocket, because this will save your job, I am telling you. Okay, this is something your constitution book, Swami's handbook, try to read it. Okay, try to read as much as possible, because rules are changing. It will always put you in a good position, Swami's handbook. And now about this term, push button procurement. Now say what in normal bidding you have to wait for 1 month, minimum 1 month or 1.5 months or 2 months it takes. Now what is push button? Push button procurement, now it's been newly introduced for selective 100 to 200 items only. Suppose I cannot say that which are the items, but when you select an item, okay, and the item value is 5 lakhs, say, item value is coming as 5 lakhs. Okay, so the GeM will give you an option. Either you go for direct purchase, because it is below 10 lakhs, no? But the L1 that is coming, you are not satisfied with that. Suppose the L1 that it is coming, it is not up to the mark that I'm looking for. So what you will do is that there is push button procurement is there. You click there. Once you click there,
what will happen? GeM will take the responsibility. You need not have a committee, you need not have anything. GeM will give push button procurement, GeM will do the processing, technical bid processing, GeM will do the financial bid processing, and after 7 to 10 days you will have the final product. That is push button procurement. Once you give a push, the system will do the rest. Okay, that is one. Second is L1. I have told you that L1 direct L1 purchase, comparing 3 products, you can go up to 10 lakhs. Then anything above 10 lakhs, but whatever I am saying is not in case of vehicle. Okay, if you want to buy a bus will automatically cost more than 15 lakh, 20 lakhs. Okay, so you need not go for bidding. Okay, you need not go for bidding. For bus, you can buy at any amount, direct purchase. Okay, recently I bought 5 buses, and I did not go. I need not go for bidding also, because it is allowing me. Why? Because this category of goods, only OEM can participate. OEM means original equipment manufacturer, like Mahindra. Maharashtra company can only register in GeM. Okay, suppose Maruti, then Shimla or wherever, Uttarakhand, where their headquarters is, they only can register. So for vehicle things, tractors and all these things, you need not compare. Okay, means bidding is not required. You can compare, but you cannot go for bidding is not required. You can go for direct purchase also. Okay, so and PSC, one more important thing is PSC. PSC means proprietary article. Suppose Windows. So do you think that there are several people are there who is making Windows? No. On Windows, MS Windows will be made by Windows only. Okay, so there are several things which are made by a unique company, a single product. Those are called proprietary item. Okay, PSC, proprietary article certificate. So PSC buying is also there. If you give PSC buying, only the OEM will come, and in that case comparison is not required, because suppose if I want to buy Windows operating system, with whom I will compare? I cannot compare Windows with Linux, because Linux is a different operating system, Windows is a different operating system. So those kind of purchases are called PSC buying. Okay, so apart from there are forward auction is there, demand aggregation, BOQ bidding. I've already said BOQ bidding and custom bidding you try to keep in your mind, and rate contract. This is also very newly introduced. Okay, rate contract, suppose for printing services. This is very important. Why? Because every time we used to go for, in an office you will have printing work, like annual reports will be there, pads will be there, the files will needs to be get printed. So all these things, you try to do rate contract. Rate contract means the seller will give the rate of a single item, and based on the L1 price you will give the order to him, and as and when a requirement will be raised, then you can take you can give order, you can place the order for the whole year. So it is called rate contract. Okay. See, again, to simplify this, what is the GeM, how GeM works? First work is registration of a buyer, because we are buyer. I'm not saying anything about seller, because we are not seller, and we need not bother also seller. So to use GeM, first and foremost things what you have to do is that you have to register yourself as a buyer. ठीक है, buyer से जैसा registered हो गया, see buyer what he can do, internal purchase approval. Internal purchase approval means there has to be some approval, like administrative approval has to be taken. So suppose if I want to buy 30 chairs, so who will give me that approval? The director will give the approval. So जैसे ही पहला क्या होता है कि इंडेंट आता है, don't go and sit in front of GeM, don't do that. You place the indent and take the administrative approval. Taking the administrative approval means वो finance में जाएगा, finance will check whether the fund is there or not and give green signal, and then the director will give the green signal. Okay, you go for purchase. Now once the director give green signal, that does not mean you can place the order. Steady, उसमें मत जाना. कभी-कभी क्या होता है ना कि director approval देता है and we think that approval is given.
approval is given in principle to buy the things, but the final price has to be seen. Okay, जैसे वो आता है, that is called internal purchase approval आ गया. If it is yes, then what you'll do as a buyer? Say as a buyer, what you'll see? You search and compare and add it in the cart. ठीक है, कार्ट में ऐड कर दिया. उसका बाद क्या, ऑर्डर प्लेस कर दिया. ऑर्डर प्लेसमेंट का ऑप्शंस क्या क्या है? आइदर यू कैन गो फॉर डायरेक्ट परचेज, बिडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स ऑप्शंस आते हैं. देन आफ्टर द ऑर्डर इज ऑर्डर डिलीवरी कंसाइनी. सो जैसे कंसाइनी क्या होता है, लोकेशन चेंज हो सकता है. मेघालय में बैठ के मैं क्या करता हूँ कि आई कैन गिव ऑर्डर फॉर उक्रुल विच इज इन मणिपुर. ओके, कंसाइनी में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑफ दैट 27 लोकेशंस. आई एम द बायर, कंसाइनी में भी डिफरेंट. ठीक है, से सपोज जो अभी मैं अरुणाचल का अगर सर्विस बिडिंग फ्लोट करता हूं, तो हु इज द कंसाइनी? कंसाइनी विल बी द अरुणाचल प्रदेश, बट आई एम द बायर. ठीक है, तो आपको ये देखना है. फिर से एक बार ऑर्डर डिलीवर हो जाता है. ऑर्डर डिलीवर होने के बाद क्या, एक्सेप्टिंग एंड सीआरएससी जनरेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी नीचे में मैंने टाइम दिया है. आई टोल्ड यू फ्यू मिनट्स बैक दैट CRSC is not mandatory, you have to generate on that day only. You can generate in the next day, but that does not mean that endless आप रख दोगे उसको. So you have got a period of 10 days time. Within 10 days you have to generate the CRSC. Once you generate the CRSC, your bill and CRSC will be generated. You process the bill and go for payment. ठीक है, और इसमें देखिए और एक क्या है, registration of seller और ये सब, this part is not required. Okay, this part is not required as a buyer. Okay, ठीक है. Same, this try to keep in your mind and try to implement in your offices. This will safeguard your service. Okay, first I will take financial approval. That means internal approval. After internal approval, what I'll go to the GeM site. ठीक है. In the GeM site, if the item is available in GeM, then I'll follow this. But if the item is not available in GeM, I'll follow this. Okay, item is not available. Who will say that item is not available? तो GeM में एक साइट एक ऑप्शन है GeM availability. GeM people used to say GeM non availability, but GeM क्या बोलता है कि GeM availability certificate means whatever the item is available in GeM, it will list out except the item which you are looking for. That means the item you are looking for is not available in GeM. That non availability certificate निकालना जरूरी है. Generate GeM availability report and process order without GeM. ठीक है, अब विदाउट GeM मीन्स विल गो बाय GFR 155. ठीक है, एलपीसी का थ्रू में जाएंगे. सो 149 इज GeM. 149 is GeM. That is, there should not be any doubt. Okay, apart from 149, 155 is there. The items which are not available in GeM, we will the competent authority or the director will form a committee. That committee will go to the local market. And that local market means sometimes it has been seen is that say people are buying goods, Meghalaya peoples are buying goods from say Manipur and saying that it is LPC. Now this is not LPC. LPC means local. ठीक है, तो ये सब चीज जो है ना आपका दिमाग में डालो कि कोई क्या होता है कि बीट कलेक्ट करना है, कोटेशन कलेक्ट करना है. भाई आई हैव गॉट सम माय रिलेटिव फार्म्स in Siliguri, say for example, I'll get the quotation from them. So buying goods for Meghalaya, quotation cannot be collected from Siliguri. That means it has to be a radius of 100 kilometer. Say for example, वो radius का अंदर में जो भी आता है, you can go and review the market and you can purchase. ठीक है, तो अगर item GeM में available नहीं है, then आप you will follow this step. ठीक है, ये निकल गया. If the item is available in GeM, then what will do? You will see the item value. If it is item is below 50,000, you will follow this. If the item is more than 50,000 but less than 10 lakh, you will follow this step. If the item is more than 10 lakhs, you will follow this step. Now, if the item is below 50,000, you can purchase through any supplier on GeM. ठीक है, और एक वन इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लायर का नाम जब तक ऑर्डर प्लेस नहीं होता तब तक विजिबल नहीं होता है. ठीक है, तो ये करेक्शन भी GeM ने कर दिया है. सो you cannot say that I am buying this good from a supplier from Guwahati only. It can go to Delhi also, it can go to Mumbai also, it can go to Haryana also. ठीक है, that's why I'll tell you, you keep your importance on brand. Okay, if I ask you to buy an AC, what you will go for?
यू नो देयर आर सर्टेन ऐसे सैमसंग है या फिर कुछ भी मतलब एनी रेप्यूटेड ब्रांड्स, हाँ एलजी है, ठीक है, एलजी है, हिताची है, बट आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, चाइनीज आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन जेम, ओके, बिकॉज जो सेलर आइटम अपलोड करता है ही हैज टू सर्टिफाई दैट द आइटम ही इज अपलोडिंग इज नॉट मेड फ्रॉम चाइना। तो इससे क्या हुआ ना कि जब से जेम आया है चाइना के लिए प्रॉब्लम हो गया है, बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स आर बीइंग असेंबल्ड इन चाइना ओनली अर्लियर। अभी देखेंगे आप डेस्कटॉप का रेट बहुत हाई हो गया। क्यों हाई हो गया? बिकॉज चाइनीज मटेरियल सस्ता रहता था, इनको असेंबल करता था, बी डेल बोलो, एसआर बोलो, जो भी बोलो, वो प्राइस कम था। अभी प्राइस हाई इसलिए हुआ बिकॉज दोज मटेरियल आर बीइंग मेड इन इंडिया, ठीक है ना। सो इफ इट इज बिलो 50,000 क्लियर, हम लोग वी कैन गो फॉर एनी ब्रांड। इफ इट इज मोर देन 50,000 बट लेस देन 10 lakhs, and that is all because for one single item, हाँ। तो we will generate comparative report, need to choose L1 price, ठीक है, and then above 10 lakhs online bidding, reverse auction and LVAS, ठीक है, ठीक, ओके। an important thing, क्योंकि जब आप जेम में प्रोसेस करोगे, आपको इनिशियल अप्रूवल आ गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, आप जेम में बैठ गया, आपको L1 मिल गया, डोंट प्लेस द ऑर्डर, ठीक है, डोंट प्लेस द ऑर्डर, बिकॉज बी इन सेफ साइड। Why I am telling you? Because I have faced several audit paras, several audit queries, even vigilance भी मिलता है, लेकिन you have to be in your position to safeguard yourself। Recently मुझे एक vigilance से एक वो आया था, they have noticed something that IP address conflict हो गया। मतलब मैंने एक bidding किया है, service bidding which is more than 15 crores, ठीक है। तो अब जेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से ट्रैक करता है? He is saying, the government of India is saying the IP address of my computer is same as the supplier. Got it? Means मैंने जिस कंप्यूटर से बिड किया है उसमें एक IP एड्रेस है, every IP is unique। एक क्या निकला कि एक महाराष्ट्र का था, एक हरियाणा का था, एक दिल्ली का था, वेंडर्स, their IP is matching with my IP, so IP कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इससे क्या मतलब कॉमन मैन को क्या पता चलेगा कि मैं खुद ही प्लेस कर रहा हूं ना, इसी कंप्यूटर में बैठ के मैं भाई आईटी का बैकग्राउंड में इतना तो गधा नहीं हूं, ठीक है ना, कि मैं इसी मशीन में बैठ के मैं अप्लाई करूंगा महाराष्ट्र फार्म के लिए, इसी मशीन में बैठ के करूंगा, नहीं करूंगा ना, अगर करना होता तो इसको मैंने कैसे सेफगार्ड किया? क्योंकि ये जब आया मुझे इमीडिएटली मेमो इश्यू कर दिया विदाउट एक्सप्लेनेशन। मेमो इश्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ आपका अकाउंट में कंप्लेन आता है तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि आप एक्सप्लेन करो कि ये क्या रीजन है, लेकिन सिचुएशन इतना सीरियस था कि मुझे डायरेक्ट मेमो इश्यू कर दिया, ठीक है। जब मुझे मेमो मिला, मेरे साथ और 2-3 जन को भी मिला था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि हमारा लीगल सेल भी है और मैं जब भी बिडिंग करता हूं, एज आई टोल्ड, मैं इंडेंटर को बिठा देता हूं सामने में, या फिर जब मैं सर्विस बिडिंग करता हूं तो जो कमिटी बनता है सर्विस बिडिंग का, पूरा कमिटी को बिठा देता हूं, मेरा सामने बैठ के करते हैं, ठीक है। इट इज दैट ओपन, तो सबको पता है। बट मेमो आया है, आई हैव टू रिप्लाई, क्योंकि मेमो तो मेरा सर्विस बुक में चला जाएगा। तो मैंने लीगल टीम को भी बुलाया, लीगल टीम को बुला के मैंने बताया कि माई आईपी इज डिफरेंट, जो आईपी काउंसिल ने भेजा है कि इट इज मैचिंग विद द आईपी ऑफ महाराष्ट्र, दिल्ली एंड हरियाणा फार्म, इट इज नॉट माई, मेरा वो आईपी है ही नहीं। सो इंक्वायरी में भी प्लेस्ड एट जेम लेवल, ठीक है। तो मैंने रिप्लाई बना के भेज दिया इन लीगल लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग तो उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो मैंने लीगल सेल को इसीलिए बुलाया कि आप लिखो। तो 10-15 मिनट में मैंने अपना रिप्लाई बना के भेज दिया। जब भेज दिया है, इन 2-3 days बैक मेरे को क्लियरेंस मिल गया, ठीक है। और उसमें इश्यू यह था कि जो 3 फार्म को उन लोगों ने नोटिफाई किया था वो टेक्निकल बिड में क्वालिफाई ही नहीं किया था, ठीक है। तो सर आप देखें किस लेवल में मतलब आपका ऊपर विजिलेंस रखा जाता है कि हम लोग का जब बीड होता है तो एक बीड में 184-200 बीड्स आता है, आउट ऑफ 284 एक ही आदमी को मिलता है, मतलब आउट ऑफ 284 बीड्स। अब क्या होता है कि जेम में आदमी जो दूसरे हरियाणा बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, वहां में क्या होता है कि ऑफिस खोलता है और एक आदमी बैठा रहता है, खाली बीड पार्टिसिपेट ही करता है विदाउट एनी रीजन, ठीक है। इसलिए आपको जब डॉक्यूमेंट इवेलुएट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है,
मतलब एक आदमी पूरा डॉक्यूमेंट देगा और दूसरा आदमी क्या होगा कि सिमिलर टाइप डॉक्यूमेंट देगा, एक आध मिसिंग करके देगा। ठीक है, तो जो इवैल्यूएशन होता है उसमें यू हैव टू वेरी केयरफुल इन दैट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दीज आर प्रैक्टिकल। एंड और एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने बताया था कि आपका एथिक्स रहना क्यों जरूरी है। मैंने रिसेंटली नहीं 2 साल पहले मैंने 5 अशोक लेलैंड का बस खरीदा, 5, मतलब मेघालय के लिए 3, मणिपुर के लिए 1 और सिक्किम त्रिपुरा के लिए 1। तो मणिपुर में डिस्टर्बेंस चल रहा था तो उसका चलता हमको उसको लेके जाने में बहुत दिक्कत हुआ था, मतलब हालांकि वो बाय रोड नहीं जा रहा था तो नागालैंड बॉर्डर में छोड़ दिया था, वो लेके गया। अब हुआ क्या है कि जब वो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया आई नीड नॉट, मुझे तो पता नहीं है हु इज अशोक लेलैंड। क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जिस दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया उस दिन मुझे एक कॉल आया, महाराष्ट्र से कॉल आया। नेक्स्ट डे उसका एक एजेंट आया, एजेंट इन द सेंस मतलब उसका जो उन लोग का डीलर का पर्सन होता है, और उसने मुझे 4% ऑफर किया। ठीक है, 4% ऑफर किया ऑफ दैट व्हीकल प्राइस। ठीक है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि सर हमारा पेमेंट आप जल्दी करा दीजिएगा, आपका 4% आपका पास पहुंच जाएगा। ठीक है, वो मुझे महाराष्ट्र से कॉल आया, बोला कि आपका पास कल कोई मिलने आएगा टू फॉलो अप द केस। ठीक है, 5 व्हीकल देना है। तो मुझे, और क्योंकि मैंने जेम को बहुत पहले से हैंडल किया तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है। तो जब वो आया मैंने उनको बोला कि देखिए जो आपका एंथुजियाज्म मैं समझ रहा हूँ, वो बोल रहा है कि सर आप लीजिए नहीं तो मेरा नौकरी नहीं बचेगा। जो लड़का आया था, ठीक है, वो गुवाहाटी से गया था, तो वो बोला कि नहीं आपको अगर कन्विंस नहीं किया तो फिर मतलब मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बोला आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आप खाली ये कन्वे कर दीजिए कि जो सिस्टम उन लोग फॉलो करता है वो सिस्टम हमारा ऑफिस में नहीं चलता है। ठीक है, एंड ये इसलिए भी जरूरी है, यू नेवर नो कौन आपका पीछे में कैसा लगा हुआ है, ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आया, मैंने मना कर दिया। ठीक है, वो चला गया। देन आई वाज कैलकुलेटिंग दैट अरे 50 लाख से ज्यादा था, एक का ऑलमोस्ट 30 लाख करके था, 1.5 करोड़ का था पूरा टोटल। 1.5 करोड़ का 4 मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए आ रहा था। ठीक है, 4 लाख रुपए आपको नेट देने आया था, मैंने मना कर दिया। फिर आपको एक टाइम में ऐसा भी लगेगा कि क्यों मना कर दिया भाई, 4 लाख रुपया तो आ रहा था। अब फायदा कहां में हुआ मैं बताता हूँ। क्या हुआ कि जब हमने गाड़ी खरीदा तो हमने स्पेसिफिकेशन देखा, हमने ग्राउंड क्लियरेंस देखा, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा था हमने उसी को खरीदा। ठीक है, वो भी कमिटी का थ्रू खरीदा। लेकिन इन प्रैक्टिकल जब वो गाड़ी आया ना, तो वो चक्का जो होता है, बस का हाइट किससे बढ़ता है, बस का हाइट एक ही रहता है, चक्का से बढ़ता है। तो पहले क्या होता है, टाटा का जो गाड़ी बसेस होता है उसमें चक्का बड़ा होता है तो गाड़ी ऊंचा रहता है। लेकिन अशोक लेलैंड का जो गाड़ी है वो चक्का छोटा होता है तो नीचे बैठ गया। जब वो गाड़ी जा रहा था त्रिपुरा तब रास्ते में ही लग गया नीचे, जब वो गाड़ी मणिपुर जा रहा था नीचे लग गया ना। अगर मैं वो 4 लाख रुपए ले लेता तो मैं उनका बिहाफ में काम करता, उनको सेफ गार्ड करने के लिए काम करता ना। तो मुझे वहां से फोन आया कि गाड़ी तो आ गया लेकिन बहुत जगह से लग गया है। तो फिर मैंने फोन किया, मैं बोला भाई जो 4 लाख मुझे देना था ना वो सारा गाड़ी में ठीक करो। ठीक है, तो वो 4 लाख नहीं, उसको ज्यादा ही लगा होगा, लेकिन आप एक पोजीशन में आ गया कि आप कुछ बोल पाए। ठीक है, तो ये एथिक्स आपको रखना होगा, और जेम के लिए इन पर्टिकुलर इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा चीज ट्रैक किया जाता है। एंड इट इज माई क्रेडिट। मैं क्रेडिट लेता हूं कि 2017 का बाद आज तक मुझे वो जेम का नोडल ऑफिसर से कोई हटा नहीं पाया है। ठीक है, और मैं रिपीटेडली एवरी नया डायरेक्टर आता है मैं बोलता सर मुझे हटाइए, मैं तंग आ गया हूँ, वेंडर्स का फोन आते मेरा पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, आपको रहना है। ठीक, बट इन ए वे इट इज गुड फॉर मी। मतलब एक आदमी विजिलेंस, एज पर विजिलेंस यू कैन नॉट होल्ड अ प्रॉफिटेबल पोस्ट फॉर मोर देन 3 years। ठीक है ना, 3 साल बाद आपको चेंज करता है। आप फाइनेंस में होंगे, आज इधर है, कल आपको दूसरा चेयर में बिठाएगा, 3 साल बाद फिर दूसरा चेयर में बिठाएगा, बट एक चेयर में हमको बिठा के रखा है, दैट इज माई क्रेडिट। ठीक है, बट ये आपको एथिक्स मानना है, बिकॉज अभी आप लोग बहुत नए हो, आपका सर्विस लाइफ बहुत बचा हुआ है, क्योंकि आगे जाके 8 पे कमीशन अभी लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो फोकस है वो अपना जो एथिक्स में मेंटेन रखिए, दैट इज द मेन मोटिव। ठीक है, तो इसमें ये आ गया। उसका बाद क्या है, ये देखिए इस तरह से आप ऑनलाइन बिडिंग करेंगे, एड टू कार्ड होने के बाद मेक एन ऑर्डर, जनरेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम डिलीवर हो गया। आइटम डिलीवर होने के बाद हम लोग इनवॉइस डाउनलोड करेंगे, CRSC जनरेट करेंगे, फिर इनिशिएट द पेमेंट। एंड एक बार CRSC जनरेट हो गया, आपको ध्यान रखना है, इट इज योर ड्यूटी टू मेक द पेमेंट विद इन 10 days।
ठीक है, विद इन 10 days ऑफ सीआरसी जनरेशन आपको पेमेंट कराना है, ठीक है। नाउ की एडवांटेजेस ऑफ बायर, मैं सेलर को यहां में ट्रेनिंग में एकदम लिया ही नहीं हूं क्योंकि सेलर हमारा पार्ट ही नहीं है, ठीक है। सेलर का भी मुझे बहुत पता है, बट सेलर का मैंने इसमें डाला इसलिए नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अब एज अ बायर व्हाट इज योर एडवांटेज, एंड टू एंड सिस्टम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट, ठीक है, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल पेमेंट आपको सारा विजिबल है, ये जेम में आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बाइंग, provides option for search, compare, select and buy facility, offers list, ये सारा जो है advantages of using GeM, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन देके जाऊंगा, you can keep it also, no issue. Now इसमें ये स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, see there is a primary user and secondary user. Primary user का क्या होता है कि say don't get confused with the primary user and nodal officer. Nodal officer मतलब I will monitor, I am a buyer myself. बट प्राइमरी यूजर कौन है, प्राइमरी यूजर है जो विल क्रिएट द सेकेंडरी यूजर, ठीक है। हमारा एक इंस्टीट्यूट में एक प्राइमरी यूजर है, हिज रोल इज टू क्रिएट द सेकेंडरी यूजर्स लाइक मी, डिपार्टमेंट यूजर्स। आई एम द सेकेंडरी यूजर आफ्टर द डिपार्टमेंट यूजर, जैसे कि मेरा ऑलमोस्ट 39 अकाउंट्स मैंने क्रिएट करके रखा है, ठीक है। सो फ्रॉम 39 अकाउंट्स जेम का परचेज हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर का रोल क्या है, he is only used for register organization, creation, modification of secondary user, manage users और deactivation। like कभी कभी ऐसा नहीं है कि मतलब एक आदमी जेम का अकाउंट है तो वो लाइफ लॉन्ग उससे करेगा, वो एक टाइम में रिटायर्ड हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, इन दैट केस यू हैव टू डीएक्टिवेट दैट अकाउंट। सो वो किसके पास रोल है, ओनली द प्राइमरी यूजर कैन डू इट, ठीक है। और फिर वो मॉनिटर कर सकता है कि कोई भी ऑर्डर प्लेस होगा, अ मैसेज विल कम टू द प्राइमरी यूजर, ठीक है। अभी कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो हमारा जो प्राइमरी यूजर है, बीइंग हेड ऑफ द ऑफिस जो होता है वही होता है प्राइमरी यूजर, नॉट डायरेक्टर। हेड ऑफ द ऑफिस अलग होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो उनका पास मैसेज जाते रहता है कि ये ऑर्डर गया, ये ऑर्डर गया, वो ऑर्डर गया, वो मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो प्राइमरी यूजर, तो इंडेंटर क्या करता है, सिलेक्ट द आइटम इन द कार्ड स्पेसिफिक बाय, बायर का क्या काम है। फिर टेक्निकल इवैल्यूएटर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निकल इवैल्यूएटर क्या होता है, जेम में एक प्रोविजन है, सपोज मैंने 39 डिपार्टमेंट यूजर बनाया है और मुझे पता है कि ये जो अगर आप लोगों का जैसे छोटा छोटा इंस्टीट्यूट होता है उसमें क्या होता है कि कमिटी में एक ही आदमी होता है, मतलब 4-5 आदमी होगा, वही आदमी सब चीज इवैल्यूएट करता है। इन दैट केस व्हाट यू डू, आई विल सजेस्ट दैट यू क्रिएट जेम अकाउंट ऑफ ऑल, ठीक है। और इवैल्यूएशन का टाइम अलग अलग होता है, आदमी मतलब जैसे कि एक कोई अगर ऐसी परचेस का इवैल्यूएटर होता है, वो माइक्रोस्कोप का परचेस के लिए इवैल्यूएटर अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो जो परचेस में इन्वॉल्व है उनका जेम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और जब आप बीट फ्लोट करेंगे टेक्निकल इवैल्यूएशन में आप टिक कर सकते हैं कि XYZ पर्सन विल बी इन द इवैल्यूएशन। तो उसमें क्या होगा, जब आप इवैल्यूएशन करेंगे उनको नोटिफिकेशन जाएगा और वो भी देख सकते हैं अपने अकाउंट खोल के, समझे ना। सोचिए एक बीट फ्लोट किया मैंने, पहले जब बीट फ्लोट किया मैंने आपको इनको कमिटी में रख दिया, ठीक है, कमिटी में रख दिया। जब जैसे ही बीट का टेक्निकल टाइम ओवर हो गया आपको नोटिफिकेशन आएगा कि इनका टेक्निकल टाइम ओवर हो गया, आपको भी आएगा, आपको भी आएगा, आपको भी आएगा। और फिर आपको एक जगह में बैठना नहीं है, आप अपना अकाउंट खोलिए, यू कैन सी द ऑल डॉक्यूमेंट, आप अपना कमेंट लगाइए, उसमें खत्म कीजिए, आप अपना कमेंट लगाइए, खत्म कीजिए, आप अपना कमेंट लगाइए, खत्म कर दीजिए, फाइनल इवैल्यूएशन जेम में हो जाता है। अब अगर आप सेल्फ इवैल्यूएटर देते हैं, अगर सेल्फ टेक्निकल इवैल्यूएटर देते हैं तो आपको सब डाउनलोड करना पड़ेगा, फिजिकली कमिटी बना के कमिटी रूम में बैठ के जो है सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन वे कि आप इवैल्यूएशन जो है एक एक आदमी को दे सकते हैं। लेकिन हमारा इसमें इश्यूज ये है कि इतना ट्रांसफर होता है कि आज अगर मैंने आपका बनाया 2 दिन बाद आपका ट्रांसफर हो गया, मैं कहां से इवैल्यूएटर ढूंढूं। सोचिए मैं बीट जब किया था यू आर देयर, बट बाय द टाइम टेक्निकल इवैल्यूएशन का टाइम आ गया, आपका ट्रांसफर हो गया, आप चला गया, अब मैं कैसे खोलूं इसको। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा सेल्फ इवैल्यूएट करके बीट को डाउनलोड कर लेता हूं और उसका बाद एक कमिटी बनता है इन पेपर एंड उसी कमिटी को मीटिंग रूम में बिठा के सारा डाउनलोड करके उनको दे देता हूं, दे टू चेक इट, ठीक है। तो ये भी है। तो टेक्निकल इवैल्यूएटर का हो गया। कंसाइनी, हु इज द कंसाइनी, कंसाइनी कैन बी एनीबॉडी, ठीक है। आपका पास याद रखिएगा, when you create your GeM account, you can be consignee, you can be buyer, you can be DDO, PAO होता है, परचेज एंड अकाउंट ऑफिसर, PAO होता है। उसका बाद आप इवैल्यूएटर हो सकता है,
ठीक है, बट पीएओ एंड कंसाइनिंग बायर कैनॉट बी द सेम पर्सन, मतलब फाइनेंस और बायर एक आदमी नहीं हो सकता है। ही कैन बी कंसाइनी, नो इशू, बट ही कैनॉट बी बायर। बायर एंड कंसाइनी एक आदमी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डीडीओ का क्या रोल है, पीएफएमएस। पीएफएमएस तो हम आप लोग का प्रोसेस क्या होता है, पीएफएमएस का थ्रू से होता होगा शायद, जो भी फाइनेंस का चीज होता है पीएफएमएस में ही होता है, ठीक है। और एक चीज है, और एक है जीपीए। जीपीए मतलब जेम पुल अकाउंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, जो भी इंस्टीट्यूट पीएफएमएस में डील करता है उनका लिए जीपीए नहीं है। कभी कभी इग्नोरेंस जो होता है ना, वो बहुत फायदा होता है। मैं जब जेम सीख रहा था जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब जेम का ट्रेनिंग भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इतना नया था कि कोई देता ही नहीं था। तो मैंने जीपीए खोल दिया अपने लिए इंस्टीट्यूट का। तो जीपीए मतलब जेम पुल अकाउंट। हालांकि हम लोग पीएफएमएस अकाउंट है, तो मुझे पता नहीं था, इवन बैंक को भी पता नहीं था। बैंक ने भी मेरे नाम से जीपीए खोल दिया। फायदा इसमें ये हुआ कि 100%, जैसे कि अभी हमारा सोचिए 200-300 करोड़ आता है खर्चा करने के लिए, तो लास्ट मोमेंट तक खर्चा नहीं होता है। हमने क्या किया, 3-4 साल तक ऑर्डर प्लेस कर दिया। मार्च 20 को प्लेस किया, 15 को प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करके जेम में उसको जेम जीपीए में बुक कर दिया, पैसा जेम पुल में डाल दिया। यूटिलाइजेशन 100%। जब अब जैसे गाड़ी क्या होता है, बस होता है, बस का जो होता है वो टाइम में आता ही नहीं है, वो टाइम में आता ही नहीं है। वो 60 डेज का टाइम, 120 डेज का टाइम होता है, उस टाइम में आपको मिलेगा ना, क्योंकि उसका पीछे लगा रहता है। क्योंकि महिंद्रा जो है वो दिन में हजारों गाड़ी देता है, आपका 2 गाड़ी के लिए वो आपको पता ही नहीं, वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो हालांकि मेरा अभी महिंद्रा से मैंने ऑलमोस्ट 21 खाली बोलेरो खरीदा है, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो इस चीज में फायदा ये होता है। जीपीए में क्या होता है कि जीपीए अगर आपके पास है, इफ यू आर नॉट पीएफएमएस अकाउंट होल्डर, ठीक है, तो आप जीपीए खोलिए। जीपीए खोलने में क्या होता है कि जब आप आइटम ऑर्डर प्लेस किया, वो पैसा आप जीपीए में डाल दीजिए, ठीक है। आइटम रिसीव हुआ, सीआरएससी जनरेट हुआ, ऑटोमेटिक 10 दिन बाद उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जेम पुल अकाउंट, इसलिए उसको बोलता है जेम पुल अकाउंट। पर रिसेंटली हमने फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स उसको हमने अपना साइड से उसका यूज थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो उसका अकाउंटेबिलिटी फिर बाद में हमें आंसरेबल, आई एम आंसरेबल कि आपने पीएफएमएस होते हुए जीपीए क्यों खोला है, ठीक है। तो ये हो गया, पीएओ हो गया। अब ये चीज देखिए, कोई भी आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग का काम कब आएगा, बिडिंग करने के लिए आपको जेम अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो आइटम आपका जेम में नहीं है उसी में आप बिडिंग करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे, जेम, ये जैसे मेरा अकाउंट है, इसमें जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। ओके, जेम 5 मिनट है, 5 मिनट। ये जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। अब जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इस तरफ में एक मैनुअल रिपोर्ट है, एक बल्क रिपोर्ट है। मतलब कभी कभी क्या होता है, 50 आइटम्स को आपका बीओक्यू करना है, तो 50 आइटम्स के लिए अलग अलग करके तो आप नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, बल्क निकालेंगे। उसमें क्या होता है, एक एक्सेल शीट जनरेट होता है, उसमें सारा आइटम डालिए और उसका अप्रोक्सीमेट रेट डालिए, तो क्रिएट हो जाएगा। उसका बाद देखिए, जब आप उसको अपलोड करेंगे और नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बीओक्यू बिडिंग कीजिए या फिर कस्टम बिडिंग कीजिए, उसके लिए अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज मस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाल के यू प्लेस इट इन द फाइल एंड टेक अप्रूवल फॉर बीओक्यू बिडिंग और कस्टम बिडिंग और व्हाटएवर। जब उनका अप्रूवल आ जाएगा, उसका अप्रूवल कॉपी हमें अटैच कीजिए, देन यू कैन गो फॉर बीओक्यू बिडिंग एंड कस्टम बिडिंग, ठीक है। तो बीओक्यू बिडिंग का बहुत सारा रूल्स है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे है। इसी तरह से आप कस्टम बिडिंग कर सकते हैं। कस्टम बिडिंग मैंने बताया कि जो आइटम विच आर नॉट अवेलेबल एट जेम ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बीओक्यू बिडिंग में क्या होता है, कब आपको बीओक्यू बिडिंग करना है, इफ द आइटम इज अवेलेबल इन जेम बट नॉट एज पर योर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आइटम इज चेयर इज अवेलेबल इन जेम बट इट इज नॉट द चेयर दैट आई आस्क्ड फॉर, सपोज स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है, तो बीओक्यू बिडिंग कब करना है, if the item is available in GeM but not as per my specification, then you'll go for BOQ bidding. Custom bidding, if the item is not available, category not available, कुछ भी नहीं है, तब हम custom bidding करेंगे। मतलब we will create custom catalog, अपना कैटलॉग क्रिएट करेंगे और फिर उसको बिडिंग करेंगे, ठीक है। ये और एक चीज है, इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने महिंद्रा का ऑर्डर किया था, तो ऑलमोस्ट 10 या 12 गाड़ी का मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है।
तो उसमें से एक गाड़ी सिक्किम में था। उसमें हुआ क्या था कि सिक्किम जो है ईस्टर्न सर्कल में आता है, बाकी नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आता है। सिक्किम जो है ना, सिक्किम का हेड जो महिंद्रा का जो रीजन है वो ईस्टर्न सर्कल में आता है। तो एक व्हीकल वहां में सिक्किम में था, तो उन लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। हालांकि बाकी गाड़ी जो है आ गया था, जगह जगह चला गया था केवीकेस का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 6 महीना बीत गया, दूसरा गाड़ी आके पेमेंट भी हो गया, लेकिन सिक्किम का गाड़ी आ नहीं रहा है, उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने क्या किया था कि एक इंसिडेंट रेस किया कि आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया बट यू आर नॉट डिलीवरिंग योर गुड्स इन टाइम। आप विश्वास नहीं करोगे, जेम में ये प्रोविजन है, चाहे वो जितना भी बड़ा कंपनी हो, वंस अ कंप्लेन इज बीन रेज्ड, एक टिकट रेज हो जाता है ना, तो एक हफ्ता बाद उसका अकाउंट लॉक हो जाता है, जब तक वो उसको सेटल नहीं करता है। उसका इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया महाराष्ट्र से, जो मारुति महिंद्रा का जो मेन कंपनी है, उन लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप अपना जो टिकट है उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हम लोग कोई भी बीड में जिसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है वो ऑटो रिजेक्ट हो रहा है। समझे कि नहीं? मतलब आपने उसका ऊपर इंसिडेंट लगाने के बाद क्या हुआ कि वो सोचिए एग्जिस्टिंग 10 महिंद्रा कंपनी है, वो तो हजारों पार्टिसिपेट करता है ना। अब मैंने एक सिंगल गाड़ी के लिए जो हार्डली 9, 10, 15 लाख का होगा गाड़ी, 10-12 लाख का गाड़ी, उसका चलते उसका करोड़ों लॉस हो रहा है, क्योंकि वो जिसमें क्वालिफाई भी कर गया है वो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम उसको रिजेक्ट कर रहा है। वो मुझे बोला है कि नहीं, आप अपना जो है टिकट विड्रॉ कर लीजिए, हम आपका व्हीकल 1 हफ्ते में दे रहे हैं। हम बोला कि हम करेंगे नहीं जब तक आप रिटर्न में नहीं दोगे। तो आप देखिए, जो जिसको हम 6 महीने तक पकड़ नहीं पा रहा था, एक ऑनलाइन इंसिडेंट रेज किया, अगला दिन कंपनी का आदमी मुझे फोन कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ जेम का इंसिडेंट का पावर है। तो आपका कोई भी सामान गलत आ जाता है, मेक श्योर टू रेज इंसिडेंट, ताकि कल हो के कोई क्वेरी आएगा ना, कोई मतलब करोड़ों का सामान आता है, कोई अगर गलत सामान आ गया है, अगर आप सोचिए फोन पे फोन किए जा रहे हैं, बट फोन वर्बल एश्योरेंस कुछ मायने नहीं रखता है। जब आप टिकट रेज करेंगे, इट इज डॉक्यूमेंटेड, आप ये बता पाएंगे कि ये सामान नहीं आया, मैंने टिकट रेज किया, दिस इज ये फॉलो अप हुआ। तो मैंने टिकट रेज किया, इंसिडेंट, फिर उसने जब मुझे रिटर्न एश्योरेंस दिया कि 1 हफ्ते में गाड़ी पहुंच जाएगा, मैंने अपना टिकट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे विड्रॉ किया और 1 हफ्ते में गाड़ी भी आ गया। ठीक है, सो इंसिडेंट रेस हो सकता है। ये देखिए, और पेमेंट मोड क्या है, जेम में सिर्फ पीएफएमएस ही एक पेमेंट मोड नहीं है, देयर आर सेवरल पेमेंट मोड्स। ये देखिए, पीएफएमएस में हो सकता है, आईएफएमएस में हो सकता है, सीजीडीए में हो सकता है, जीपीए में हो सकता है। जीपीए मतलब जेम पुल। तो जेम पुल में क्या होता है, ये चालान बेस्ड होता है, नॉन चालान बेस्ड होता है, तो वो अलग है। बट ये आइदर ऑफ द वन, हाँ, किसी के पास अगर पीएफएमएस है तो वो जीपीए नहीं करना है, किसी के पास जीपीए है तो वो पीएफएमएस नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से रेलवे का अलग ही पेमेंट है, ऑप्शन है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स। सो अभी एक चीज देखिए, क्योंकि आप बायर हो तो आपको अपना अकाउंट जो है हेल्दी रखना है। कैसा हेल्दी रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि सामान मिल गया है, विद इन 10 डेज पेमेंट कर देना है, क्योंकि जैसे आप नहीं करोगे, आपका पेमेंट अगर 30 डेज तक नहीं होता है, जेम विल मार्क यू एज अ रेड बायर। ठीक है, आप रेड बायर का लॉस क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि अगर आप रेड बायर हो तो जो सेलर है, ही कैन रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट एट एनी टाइम। बट आप अगर ग्रीन बायर हो तो बायर हैज टू एक्सेप्ट योर ऑर्डर। क्यों? इससे फायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेलर साइड में कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए उन लोग क्या होता है, प्राइस को इतना नीचे कम कर देता है, इतना नीचे कर देता है प्राइस को, कि जो दूसरा वेंडर है उन लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है। अगर आप बायर हो, सोचिए मैं ये चेयर को ना 1000 रुपए में कर दिया, मुझे पता है ये 1000 रुपए में आएगा नहीं, लेकिन मैंने 1000 रुपए कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर आने से मुझे देना ही नहीं है। उसका चलते मैं जो जेन्युइन सप्लायर है उसका काम रोक रहा हूं। ठीक है, अब इफ यू आर रेड बायर तो वो तो रिजेक्ट कर सकता है। इफ यू आर ग्रीन बायर, 1000 रुपए में वो सामान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये अपना अकाउंट को हमेशा ग्रीन बायर हिसाब से रखिए, रेड बायर या ऑरेंज बायर मत होइए। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है ना, मोर देन 30 डेज 30 पेमेंट ड्यू फॉर मोर देन 70 डेज होने से पोस्ट सीआरएससी, मतलब पोस्ट सीआरएससी में सीआरएससी जनरेट करने का बाद। ठीक है, और सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये वाला ना, ये वाला।
तो ये ऑरेंज के लिए भी कैटेगरी है, तो दिस इज देयर। आउट सजेस्ट कि आप लोग जाने के टाइम ना ये प्रेजेंटेशन ले जाइए, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कि मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये 1 घंटा का क्लास है ही नहीं, जेम एक दिन में होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए जेम एज ऑन डेट में क्या है कि जेम में ये स्टडी किया गया है और पाया गया है कि ऑन एन एवरेज जो है 9.75% हम लोग का सेविंग होता है परचेस में, जेम में। और अभी देखिए आप, जेम हैज 2,21,896 बायर। दिस इज सारा रिकॉर्ड जो है ना 31 दिसंबर 2025 का है, ठीक है। और इसमें देखिए कितना सेलर्स है, 1,02,24,393 सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इज देयर। तो कोई अगर आपको बोलेगा कि जेम में सामान नहीं मिलता है, देन मैं बोलूंगा गलत बोल रहा है वो। आज का दिन में आपको ऐसा कोई सामान नहीं है कि जेम में नहीं है, सारा सामान जेम में है, ठीक है। वो एक दिन में नहीं बना, वो लास्ट 2017 से लेके आज तक इतना सालों में जेम ने अपने आप को अपग्रेड किया, ठीक है। एंड कितने एमएसएमई, हाँ एक चीज है, एमएसएमई को जेम में बहुत प्रेफरेंस देता है, ठीक है। देयर आर ऑलमोस्ट 8 लाख एमएसएमएस। और कितना प्रोडक्ट्स है जेम में, ऑलमोस्ट 3,77,000 प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन जेम, ठीक है। एंड उसमें कैटेगरीज इतना है एंड 351 सर्विसेज। आपको इसलिए मैं बता रहा था ये सब चीज कि कोई भी आपका इंडेंटर होगा ना, आके बोलेगा भाई मुझे नॉन अवेलेबिलिटी दे दो, मैं लोकल मार्केट से खरीद लूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सीक्वेंसिंग जो होता है ना, सीक्वेंसिंग आप लोग को पता नहीं साइंटिफिकली आप लोग को नॉलेज है कि नहीं, सीक्वेंसिंग एक सर्विस होता है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग सर्विसेज। हाँ, तो कभी कभी क्या बोलता है इंडेंटर क्या होता है कि आपको भ्रमित करने के लिए वो डीएनए जो सर्विस है वो बोलता ही नहीं है। तो आपको इफ यू आर अ बायर यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल कि वो क्या मांग रहा है, वेदर इट विल कम अंडर सर्विसेज, वेदर इट विल कम अंडर प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को सर्विसेज में ढूंढोगे तो वो तो कभी नहीं मिलेगा, और अगर सर्विसेज को आप प्रोडक्ट में ढूंढोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जो इंडेंटर को चाहिए वेदर इट विल कम अंडर प्रोडक्ट और इट विल कम अंडर सर्विसेज, ठीक है। ये दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज अप टू 31 दिसंबर 2025 तक का ये स्टैटिस्टिक्स डाटा है, ठीक है। एंड दीज आर द सर्विसेज। देखिए मैं इसलिए दिया हूं ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपका सामने रहता है देन वी नो दैट ओके हमने इसको देखा है, ये सर्विसेज में है। क्या क्या है, व्हीकल हायरिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, गुड ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, सिक्योरिटी मैन पावर, प्रोफेशनल सर्विसेज, कैंटीन एंड कैटरिंग सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, डाटा एंड वॉइस सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विस, सारा जेम में है। ऑलमोस्ट 351 कैटेगरीज अवेलेबल है। ये मैं सिर्फ सर्विसेज का बात कर रहा हूँ। गुड्स तो हमारा कितना है, 3,77,000 है, 3,77,000। तो इसलिए जेम में नहीं है बोल के बहुत कम चीज है अभी। ओके, हम लोग को अभी क्या क्या चीज ध्यान रखना है, वेरी लास्ट सेकंड लास्ट स्लाइड, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। बायर्स आर नॉट अलाउड टू प्लेस एनी ऑर्डर एट जेम प्राइस आउटसाइड जेम। पहला बहुत जगह में होता है, अभी बैरकपुर में हुआ है, डायरेक्टर का ट्रांसफर हो गया, सस्पेंड हो गया, ट्रांसफर नहीं हुआ सस्पेंड हो गया। क्या था, मैं उनका गलती नहीं बोलता हूं, मैं उनका गलती नहीं है, गलती किसका है, आप लोगों का जैसे लेवल में जो काम करके ऊपर तक जाता है ना फाइल, इनका गलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको रूल्स पता होना जरूरी है, क्योंकि एक डायरेक्टर ब्लैंक साइन मारता है, किसका ऊपर भरोसा करता है, वो जो डीलिंग असिस्टेंट है उसी पे भरोसा करता है ना। कल होके आप लोग बड़ा पोजीशन में पहुंच जाएगा, आपको सारा नॉलेज नहीं होगा, बट आप किस पे भरोसा करेंगे, जो आपका सबऑर्डिनेट है उन पर भरोसा करेंगे। उन्होंने क्या किया था कि एक्चुअली में हमारे यहाँ में एक चीफ फाइनेंस ऑफिसर था, वो उनका वहां पर ट्रांसफर हुआ। जब उनका वहां पर ट्रांसफर हुआ, वो देखा बहुत इरेगुलरिटीज है परचेज में, उन्होंने मुझे फोन किया कैसा जेम और नॉन एबिलिटी निकालना है, मैंने भी दे दिया, बता दिया कि उनका जो परचेज ऑफिसर था उन्होंने मुझे फोन किया। तो उनका ऑलमोस्ट 90 बिल्स, करोड़ों में था, 90 बिल्स जो था नॉन एबिलिटी ऐसे ही निकाल दिया, खाली प्रिंट कर दिया। नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका नाम किसने निकाला, कब निकाला, आईपी एड्रेस से लेकर सब कुछ एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में निकलता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है नॉन एबिलिटी निकालने के लिए और आपने डायरेक्ट सर्च किया और आइटम दिखा नहीं बोल के उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, दैट इज नॉट नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन वो डायरेक्टर को पता नहीं था, उसने अप्रूव किया। करने के बाद जब वो फाइनेंस ऑफिसर गया, वो तो कंप्लेन दे दिया वहां पे ऊपर विजिलेंस में। जब विजिलेंस आया तो देखा भाई जो सारा सामान जेम में अवेलेबल है, आप नॉन एबिलिटी दिखा के लोकल मार्केट से ले रहे हो, दैट मीन्स आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, और उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये काम होना चाहिए, जो आपका सबऑर्डिनेट ऊपर में है जो भी है उनको प्रॉपरली गाइड करो, चाहे उनके लिए आपको खराब होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार उनको ये पता चल जाएगा ना, बिकॉज जो रूल्स है, रूल्स आर मेड टू डिफेंड योर सेल्फ, मतलब आपको बचाने के लिए है, ना कि आपको यू हैव टू बी, आपको लॉयल बनना है, ठीक है। किसी को लॉयल बनने का चक्कर में क्या होता है, गलत काम करता है, वो मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइजेस इन जेम्स आर डायनेमिक, तो जो जेम में प्राइस है वो डायनामिक है, एवरी आवर्स एवरी डे इट इज चेंजिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जेम में जो कैटेगरी है वो ये मतलब Q1 क्वाड्रेंट, बहुत सारा 6 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है जेम में, जो प्रोडक्ट मतलब बायर्स है। Q1 मतलब OEM, मतलब क्वाड्रेंट 1 में OEM को रखा गया है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग लाइक व्हीकल्स, ठीक है, वो OEM है। नेक्स्ट है Q2 मतलब OEM वेरीफाइड, मतलब जो Q1 है वो Q2 है, Q1 का ऑथराइज सेलर है, ठीक है, वो आ गया Q2। तो मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर जेम बाइंग, आप हमेशा Q2 को प्रेफर करो, और Q1 है ना, Q2 है ना, Q3 है, वो कैटेगरी ऊपर में आ जाता है। Q3 मतलब वो कोई वेरीफाइड नहीं है, मतलब मैं एक दुकान खोला हूँ, मेरा एक शॉप है, मैं उसमें चावल भी रखता हूँ और इंजन भी रखता हूँ, गाड़ी का इंजन भी रखता हूँ, तो मैं सब रखता हूँ, तो मैं हो गया Q3 सेलर। लेकिन मैं अगर Q1 सेलर होऊंगा तो मैं इंजन ही रखूंगा, अगर इफ यू आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ये इंजन, ठीक है। और ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, दीज आर हेल्प नंबर से, और इसमें ट्रेनिंग मैनुअल का एक लिंक दिया है, ठीक है, उसमें क्लिक करके आप लोग ट्रेनिंग मैनुअल देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ओके, ठीक है। तो ये मैंने इसमें दे दिया था, तो आप लोग ले सकते हैं, ओके, थैंक यू। अच्छा अच्छा।